गिरा माहुर्देवीं द्रोहिण गृहिणीमागम विदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमत्रितनया तुरीया कापि त्वमधुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी विधि की पत्नी तुम्हें भारती कहते आगम के विद्वान हरि की गृहिणी रमा शंभु सहचरी करे गिरसुता बखान पर कोई हो आप तुरिया महिमा तव दुर्गे अपार पर ब्रह्म पटरानी भ्रमते तुम्ही महामाये संसार। हे परम ब्रह्म की महाराकी, शास्त्रों के जानने वाले ब्रह्मा की पत्नी को सरस्वती वाक देवी कहते हैं। विष्णु की पत्नी को पद्मा कहते हैं, कमला कहते हैं, और हर की यानी शिव की सहचरी को पार्वती कहते हैं। परंतु तू महामाया कोई चौथी ही है, तेरी महिमा असीम है। तूने सारे विश्व को भ्रम में डाल रखा है, तुझको जानना कठिन है। सरस्वती का बीज मंत्र ऐम है, लक्ष्मी का श्रीम, पार्वती का क्लीम और महामाया का ह्रीम। वाग्भव कूट का तीसरा अक्षर शक्ति का वाचक है और वर्णमाला का चौथा अक्षर होने से तुरीय पद समाधि का द्योतक है और वह सब बीजाक्षरों के अंत में रहता है। अनुस्वार भी शक्ति के साथ सदा रहता है क्योंकि वह शिवात्मक है। इसी को काम कला भी कहते हैं। ओ कंसॉर्ट ऑफ सुप्रीम परम ब्रह्म, Param Shiva, wise and learned men describe you as Saraswati, the consort of Brahma, and Lakshmi, the consort of Vishnu, and also as the daughter of Himavan, the consort of Shiva. But you are the greatest divine power with inscrutable and infinite glory. You are the consort of Supreme Brahman, Param Shiva. You are the fourth stage of consciousness. This 97th verse is one of the jewels of Saundarya Lahari, which describes the powers of Shiva and Shakti. It is necessary to understand two words in this verse before we understand the grandeur of this verse. First is Param Brahman. Though Vedanta describes Param Brahma without any name for the sake of realizing his glory and grandeur, he is described here as Param Shiva. And the second is Mahamaya. Mahamaya means illusion. She is known as Mahamaya Swarupini. The entire universe functions on the basis of Maya or illusion. If she does not cast her effect of Maya on this world, there will be no activity at all. This verse can be further explained in a way that every creation comes under her direct control and supervision. It does not in any way undermine other deities, but explicitly says that she alone is the supreme authority simply because she holds the unique absolute power of Shiva, and the entire creation begins from this power known as
Mahamaya or Parashakti. There is yet another conveyance in this verse about the fourth stage of consciousness. We already know about the three states of consciousness: Jagrat, normal active state; Swapna, the dream state; and Sushupti, the deep sleep state. Now, beyond these three normal and mundane levels of consciousness, there are two other stages known as Turiya and Turiyatit. So, Turiya is the fourth stage of consciousness which is used in this verse. It cannot be experienced automatically. This stage can be attained only and only through meditation. This stage is not reached to any of the three mundane stages. This stage is not related to any of the three earlier stages. In the waking stage, we are associated with consciousness. In the dream stage, our mind is associated with our consciousness. In the third stage of dreamless sleep, consciousness has no part to play, as the mind at this stage is at rest. But in Turiya stage, one has to tune his mind to become unaware of consciousness. This can be attained only by practice. She exists in the form of Turiya stage. This stage of consciousness is witnessing the consciousness of the other three stages. In this stage, one is neither the Brahman nor his own self. If one is able to advance to the next stage of Turiyatit, he merges with the Brahman. And if he falls from the Turiya stage, he is again bound by worldly actions and the associated miseries. आइए अब 9 बार इस श्लोक की पुनरावृत्ति करते हैं और आज का जप संपन्न करते हैं। गिरा माहुर्देवीं द्रोहिण गृहिणीमागम विदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वमधुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी गिरा माहुर्देवी द्रोहिण गृहिणीमागम विदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीम महिमा महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी गिरा माहुर्देवी द्रोहिण गृहिणीमागम विदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीम महिमा महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी गिरा माहुर्देवीं द्रोहिण गृहिणीमागम विदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीया कापि त्वमधुरधिगम निस्सीम महिमा महामाया विश्वं
भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। गिरामाहुर्देवी द्रुहिण गृहिणीमागम विदो। हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया। तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा। महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। गिरामाहुर्देवी द्रुहिण गृहिणीमागम विदो। हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया। तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा। महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। गिरामाहुर्देवी द्रुहिण गृहिणीमागम विदो। हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया। तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा। महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। गिरामाहुर्देवी द्रुहिण गृहिणीमागम विदो। हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया। तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा। महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। गिरामाहुर्देवी द्रुहिण गृहिणीमागम विदो। हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया। तुरीया कापि त्वं दुरधिगम निस्सीम महिमा। महामाये विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। ॐ उमामहेश्वराय नमः। ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै